हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ASA एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 79 रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल ग्रामर बुक। ये आपका बुक 2 है, कॉम्पोजिशन, जिसमें पार्ट 1 एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन है और चैप्टर है 11 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चलिए सबसे पहले अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहाँ दिया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पहला दिया है वी बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस में लिख सकते हैं वी बिलीव इन हिज इनोसेंस। इट वॉज मच रिग्रेटेड दैट ही वॉज एब्सेंट। हिज एब्सेंस was much regretted. The consequence of his carelessness was that the game was lost. His carelessness resulted in the loss of the game. He asked why I came. He inquired about my reason for coming. He ordered that the traitor should be executed. He commanded the execution of the traitor. It is to be hoped that he escaped unhurt. Hopefully, he escaped unhurt. I do not know when I shall return. I am uncertain about my return time. We hope that better times will come. We anticipate the arrival of better times. The news that the enemy landed spread like wildfire. The news of the enemy landing spread rapidly. That I was successful does not make me happy. My success does not bring me happiness. He ordered the police that they should imprison the rioters. He ordered the police to imprison the rioters. That you should be willing to believe this is incredible. It's incredible that you would believe this. Whoever is prudent is respected. Prudent individuals are respected. Or you can write, a prudent person is respected. It is reported that our troops have won a victory. Reports say our troops have won a victory. Or you can write, the victory of our troops is reported. All believed that he was guilty of murder. Everyone believed he was guilty of murder. Tell me what you mean by this. Explain to me what you mean by this. Or you can write, tell me your meaning. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए ASA एजुकेशन। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।